रिपब्लिक डे का बारे में हम लोग बात करने से दो तीन चीज अहम है। जो हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स जो अपना लाइफ एक अहम है, हमने ड्रॉप किया लेकिन 26 भारत हम लोग अपना 26 जनवरी पैरेबल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो के सुख शांति का प्रभाव लेकर आने के लिए मेरा कोशिश था। कम्युनिटी में, इंडिविजुअल लाइफ में कोई किसी का तकलीफ ना हो। सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं, ये सबका, आप लोग सबका कंट्रीब्यूशन है। बोडुमसा डाइन का जितना भी सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए आज डाइन बोडुमसा में डेवलपमेंट का साथ शांति, सिक्योरिटी एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस हमने देखने के लिए मिल रहा है। मेरा विश्वास है आने वाला दिन में हम सब मिलके और आगे शांति लेके आएगा। और सबसे बड़ा चीज क्या है, रिपब्लिक डे हम लोग पर्व मना रहा है। हम लोग को याद करना है पैरेबल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग जिस हिसाब से चलता है, जो हम लोग का सिस्टम है, उसको हम लोग ध्यान रख के आगे चलना है। हर जीवन में, समाज में शांति लेने के लिए कोई किसी का लाइफ में तकलीफ नहीं देना है, नेगेटिविटी हम लोग नहीं लेके आना है। मेरा देशवासियों पार्टिकुलरली 49 बोसरा को मिलकर चलेंगे और जैसे हम लोग आज 26 जनवरी मना रहा है, आने वाला दिन में हम लोग अपना सोसाइटी को अच्छा ढंग से सेव करके शांति लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। जब तक शांति नहीं होगा, कोई भी रास्ता पीस एंड डेवलपमेंट बिना शांति से नहीं होता है। इसलिए मेरा अपील है आप लोग को, आने वाला दिन में आप लोग अपना समाज को आगे ले जाने के लिए जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको ध्यान में देख के हम लोग चलेंगे। और आज का दिन में जब सेरेमनियल फ्लैग होस्टिंग होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त में, हम लोग कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, हम लोग सब इक्वल है, बराबर है। इसलिए हम लोग जब 15 अगस्त में, 26 जनवरी में जब हम लोग फ्लैग होस्ट करते हैं और पब्लिक को एड्रेस करते हैं, उस समय में नॉर्मल मीटिंग ऐसा हम लोग कोई किसी को इंडिविजुअली एड्रेस नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग जब भी सेरेमनियल फ्लैग होस्टिंग में हम लोग एड्रेस करते हैं तो देयर बिलव्ड सिटीजन्स बोल के हम लोग एड्रेस करते हैं। आज हम लोग जैसे फ्लैग अनहोल्ड किया, फ्लैग का ट्रैंकुलर फ्लैग का नीचे में हम लोग खड़ा हुआ है, हम लोग ये प्लेस करना है। हम लोग ये जो हम लोग का ट्रैंकुलर फ्लैग को हम लोग याद देंगे, इसका हिसाब से हम लोग का लाइफ आगे चलेंगे। वही हम लोग अपना दिल में रखना है। और सेकेंडली, जब हम लोग सेरेमनियल फ्लैग होस्टिंग करते हैं उस समय में हम लोग रिटन ड्राफ्टेड स्पीच क्यों देते हैं? आज का दिन में कोई किसी का दिल में दुख नहीं करना है, इसलिए हम लोग जनरली ड्राफ्टेड स्पीच बोलते हैं। जब हम बात बोलेंगे, पब्लिक को एड्रेस करेंगे, उस समय में कोई इंडिविजुअल को, कोई जाति को, कोई धर्म को
हर्ट नहीं करने के लिए हम लोग ड्राफ्ट एक स्पीच, ताकि हम लोग अपना स्पीच से आउट ट्रैक ना हो, इसलिए हम लोग ड्राफ्ट एक स्पीच बोलते हैं। इसलिए मैं अभी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग यहाँ आके यहाँ में जितना भी राष्ट्र सैल्यूट दिया है, मार्च पास्ट पार्टी, बैंड पार्टी, और यहाँ में जितना भी कल्चरल ट्रूप्स आप लोग जो पार्टिसिपेट करने जा रहा है और आप लोग अभी कर रहा है, मैं दिल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग का जो यहाँ आके जो आप लोग गैदर हुआ, इसने आज सेलिब्रेशन को बहुत आगे बढ़ाया एवं एक ग्रैंड सक्सेस करने दिया है बोल के। आप लोग को एक दो बार जो हिंदी से जो बोलना था, आप लोग को मैं सुना दिया। मैं अभी जो फॉर्मल ड्राफ्टेड स्पीच बोलने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, इंग्लिश से ड्राफ्ट किया हूँ। हम जितना भी असमीज बोलिए, जितना भी हिंदी बोलिए, हम लोग का जो स्पीच है बजरिया है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज सेरेमोनियल फ्लैग होस्टिंग है, इन प्रॉपर मैनर आप लोग को इंग्लिश से एक दो बार बोल दूँगा। मैं समझता हूँ आज का दिन में सब मैक्सिमम आदमी इंग्लिश लिख नहीं रखने से भी, बोल नहीं रखने से भी समझता है, और बाकी तो ऐसे भी आज का डेट में सब एजुकेटेड है। इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रहिए। मैं अपना ड्राफ्टेड फॉर्मल स्पीच को मैं आप लोग का सामने में बोलने के लिए कोशिश करूँगा। Dear beloved citizens of Dine and Bodumsa, as an elected representative, I am extremely privileged to extend my wholesome, sincere and patriotic greetings and congratulate the people of 49 Dine Bodumsa Assembly constituency of the state of Arunachal Pradesh and all the proud citizens of nation as a whole. On this auspicious day, we have gathered to celebrate the spirit of unity and diversity that defines our great nation. As we mark another Republic Day, let us reflect on the principles that bind us together as Indians. Needless to repeat the importance and significance of observing this day of 26 January throughout the length and breadth of the nation as Republic Day scripted with golden words in the history of India freedom struggle. Yet, I feel the urge to remind particularly the younger generation once again that today we commemorate the birth of our democratic republic, a testament to the sacrifices made by our forefathers. The Constituent Assembly of India had adopted the Constitution in 1949, but it came into effect from 26 January 1950, thus marking it as the Republic Day of India. Yes, it is the day when the Constitution of India came into effect in 1950, superseding the swiftly existing Government of India Act 1939 and turning the country into an independent republic. Ladies and gentlemen, our Constitution, the guiding light of our democracy, enshrines the value of justice, liberty, equality, and fraternity. It is a testament to the vision of our founding fathers who dreamed of a sovereign, socialist, secular, and democratic republic.
acknowledging the deep, unforgettable, and supreme sacrifices made by the Indian freedom fighters during their struggle against the British colonial regime in India. I extend my salutation and offer my homage and tribute to the brave soil of the soil. Today, we breathe under the independent sky of Republic country only at the cost of the lives of several prominent freedom fighters, namely Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Mangal Pandey, Netaji Subhash Chandra Bose, and several others. My dear residents of Dine and Bodumsa, the Republic Day address on the genius, significance, and charm of the day would remain incomplete without quoting Dr. Bhimrao Ambedkar, the forerunner and the chief architect of the Indian Constitution. The great man Bharat Ratna B.R. Ambedkar, with qualifications of the highest degrees, was appointed as the chairman of the drafting committee comprising a 7-member team to prepare a draft of the Constitution of Independent India. Being the first law ministers of Independent India and constitutional expert, Dr. Ambedkar had to play crucial roles in viewing the structure of the government and the nature and form of the constitution that would best suit India, a third world country. Dr. Ambedkar strongly believed that political independence cannot assure either social solidarity or national integration in the absence of social justice. Being a democratic socialist, he propagated that fundamental rights have little meaning to the people in the absence of social democracy. According to him, the best government rests on the people, not on the few persons, and not on property. On the free development of public opinion, and not on authority. Today, as we stand beneath the triangular, let it serve as a reminder of the sacrifices made by our freedom fighters who laid the foundation of the independent India. It is our duty to uphold the democratic ideals they fought for, ensuring a nation where every citizen's rights are respected and protected. In our diverse tapestry of cultures, languages, traditions lies our strength. Let us celebrate this diversity, understanding that it is the mosaic of our nation that makes us truly unique. As we progress, let inclusivity be our guiding principle, fostering an environment where every citizen can contribute to the growth and development of our beloved country. While we commemorate our achievements, let us also acknowledge the challenges that lie ahead. Together as responsible citizens,
Let us work towards eradicating poverty, promotion education, fighting the menace of drugs, and building a society that leaves no one behind. In this ever-changing world, let us embrace the values that bind us together. Let our actions speak louder than words as we walk towards a nation that not only stands tall but reaches out a helping hand to those in need. Dear beloved citizens of Dain and Bawdungsa, today as we unfold our flag high, let us renew our commitment to the principles that define us. Let us pledge to protect the rights of every individual, regardless of their background or beliefs. Let us strive for inclusivity, ensuring that the tapestry of nation encompasses the diverse threads of our society. Ladies and gentlemen, Dain Bawdungsa, the lone General Assembly constituency of the state, is also not lagging behind in its bid to contribute towards the overall peace, progress, development, fraternity, and integration of the state and the nation as a whole. The lofty ideals and objectives as enshrined in the preamble to our Constitution have always been my top priority as far as humanly possible to secure the ends at its optional level. Dain Bawdungsa, a perfect replica of mini India, is inhabited by multiple tribes in perfect harmony with strong sense of brotherhood and mutual respect for each other. I must take a special note to appreciate the collective support and inspiration which I have been drawing enormously from the people of the constituency in maintaining a total peace and harmony. Because of your continuous love, I have been able to discharge my responsibility in the best interest of the people and the place over a period of almost 5 years of my tenure as your MLA. You are the reason why Bawdungsa Dain has emerged as one of the most progressive, peaceful and fast developing constituency of the Arunachal Pradesh, with a wonderful display of unity and integration in spite of differences that actually adds to the beauty of the people and the place. I firmly believe that marching ahead together with the same spirit and zeal in the subsequent days would definitely help building a better tomorrow for all, defeating all the perverted forces that are detrimental to society and people. Let us resolve to fight tooth and nail against all challenges that threaten the integrity, peace and fraternity of our rich social fabrics. As we celebrate this significant day, let us also remember that we have a greater responsibility to ensure that the values and ideals enshrined in the preamble of our Constitution are upheld and protected in letter and spirit. Every citizen has the right to access
education, healthcare, and fair chance to succeed. It is our collective responsibility to build a better future for all and to create a more equitable and prosperous society. On this Republic Day, let us renew our commitment to building a strong and vibrant nation that countries across the globe might acknowledge and admire. Our beautiful state of Arunachal Pradesh, which has witnessed revolutionary changes and reformations under the present government, also needs a special mention. A matter that broadens our chest with pride. The state government is led by young, far-sighted, energetic, and people-friendly Chief Minister Sri Pema Khanduji and Deputy Chief Minister Sri Chaunamanji have achieved several milestones in various sectors of socio-economic, governance and infrastructures, etc. in the state. Marching ahead, unstoppable, the popular government of the state has set numerous unprecedented records and histories which raise our heads in pride and reverence. Let us resolve and renew our commitments towards the government which is pro-people and pro-development. Meanwhile, let me take the opportunity here to express once again my gratitude towards the civil administration, different wings of security and defense forces, state police personnel, IRBN units, CRP Jawans, executives and officials of various line departments, teachers and students, appointed members, Gaumburas, volunteers, women organizations, NGOs, businessmen and traders, cultural troops, march past troops, and my dear media friends for being the stakeholders of today's momentous occasion. There is no denying the fact that the smooth and colorful celebration of this Red Letter Day here reflects your utmost sense of patriotism and devotion towards our motherland. On this Republic Day, let the flame of patriotism burn bright within each of us, inspiring us to strive for holistic development of our motherland. May we continue to be the architects of our nation's destiny, working hand in hand to build a future that is just, prosperous, harmonious, and sustainable. Thank you. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Jai Arunachal.
Thank you, Honorable MLA sir, for your enlightening Republic Day speech. Your words resonated deeply, inspiring us to reflect on the significance of this Republic Day. Thank you for your unwavering commitment for the development of the constituency and its people. Now we'll head on to our next program. We'd like to request Honorable MLA sir, the Panchayat leaders, OC sir, ESC sir, JPM sir, on the stage to proceed to the exhibition stalls to inaugurate them. Our Honorable Chief Guest, along with other dignitaries, we are on the way for inauguration of exhibition hall. Let me remind you, today we are celebrating the 73rd Republic Day 2024 between Viksit Bharat and Bharat लोकतंत्रता की मधुर भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज के जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इनॉग्रेशन ऑफ एग्जीबिशन स्टॉल के बाद सबसे पहले हमारा होगा पीटी डिस्प्ले